Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, in this session, we will do a quick revision of chapter number 5, that is energetics of chemical reactions. Basically, in this chapter, we have studied about thermodynamics. So, what does this term thermodynamics mean? Thermodynamics is basically a combination of two words, therm and dynamics. Therm means heat, while dynamic means to flow or motion. So, the branch of science which deals with the interconversion of heat energy into another form of energy is called thermodynamics. बेसिकली साइंस की वो ब्रांच जो कि आपके पास एनर्जी की कन्वर्जन के साथ डील करे, मतलब एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। तो उस कन्वर्जन को स्टडी हम जो है वो थर्मोडायनामिक्स के थ्रू करते हैं। We have discussed about some thermodynamic terms, important terms related to thermodynamic processes. So we have studied about the types of system or thermodynamic systems. There are basically three types of systems: open system, closed system, and isolated system. Open system is a system in which heat and mass or matter both can transfer in and out of the system, while a closed system is a system from which heat can be transferred in or out of the system but not the mass, वो इन और आउट नहीं हो सकता। इधर कंपैरिजन के लिए टी कप है, ओपन टी कप है, इस कप में से जो है वो एनर्जी बाहर भी जा रही है और अगर ये इसमें से टी स्पिल हो जाए तो मास बाहर आ जाएगा। बट ये कवर्ड कप है, इसमें से एनर्जी तो सराउंडिंग्स में जो है वो ट्रैवल कर रही होगी, बट मास जो है क्योंकि कवर्ड है तो वो जो है उसके बाहर जाने के चांसेस यहाँ पर रेयर है। थर्मस आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है फ्रॉम विच हीट एंड मास बोथ कैन नॉट ट्रांसफर। सो यहाँ ये क्लोज होता है और ये जो है वो इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसकी वजह से हीट कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। Okay, we have studied about systems, surroundings and boundary, what these terms means. A system is anything which is under consideration, surrounding, and this universe outside the system or except the system is boundary, is surroundings, and the imaginary or real line or anything which separates a system from its surrounding is termed as boundary. एक और एग्जाम्पल है, यहाँ सिस्टम ये है आपका, इसकी सराउंडिंग्स आउटसाइड जो भी वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, उसकी सराउंडिंग्स है, while this container and this piston is behaving as a boundary here. Okay, we've studied about macroscopic properties, microscopic properties. So what is the difference between these two types of properties? Macroscopic is for macro is for big and scopic is to see. What you can see is macroscopic and micro is for tiny and small. So what is happening on a scale that you cannot see is basically microscopic level. Here are some examples of macroscopic and microscopic properties: density, phase, appearance, size. These all can be visualized without the aid of any microscope. So these are properties: size of any system, volume, its appearance. These all are macroscopic, while the atomic makeup, the structure or the arrangement of atoms in any compound or any crystal, and the reactions, basically we cannot see them with our eyes. So these are microscopic properties.
We have also studied about the types of microscopic properties, intensive properties and extensive properties. Intensive properties do not depend on the amount of matter in a sample. Intensive properties do not depend on the quantity or matter or mass of the system or anything which is under consideration. But extensive properties depend on how much matter our sample contains. It depends on the quantity of matter present in the system. So, for example, boiling point, अगर हम water का एक मग लें, उसको बॉईल करने के लिए जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम एक मग के बजाय एक बकेट वाटर ले लें तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉईल करेगा। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर. For extensive properties, here you can see entropy. Entropy is basically the disturbance of or disorder of molecules. So entropy is an extensive property. More molecules or more atoms, more will be disturbance and more disordered they could be. Less होंगे तो disorder भी कम होगा. और फॉर सपोज मास या वेट, अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली मास भी ज़्यादा होगा, कम क्वांटिटी है तो मास कम होगा. We have also studied about exothermic reaction and endothermic reactions. Exothermic is for outside, therm is for heat. So a reaction that releases energy from the system is in the form of heat is known as exothermic reaction. So here in this example you can see heat is emitting out from this system into the surrounding. Endo is for inside and therm is for heat. So a reaction that the system absorbs energy from its surrounding in the form of heat is known as endothermic reaction. Endothermic reactions are those reactions which take place by the absorption of heat. So in this example you can see heat is transferring or traveling from the surrounding to the system. तो वो रिएक्शन जो कि हीट की प्रेजेंस में हो वो एंडोथर्मिक है, सिंपल वर्ड्स पे, एंड वो जो कि हीट रिलीज करके होंगे आप उनकी सराउंडिंग को कूल कर दें, कूल डाउन कर दें, टेम्परेचर लो कर दें, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पर आपके पास ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. आइस मेल्ट कब होगी? जब वो ठंडे से गर्म टेम्परेचर की तरफ जाएगी. एंड फॉर सपोज बर्निंग, आप वुड को बर्न करें या आप कोई फ्यूल बर्न करें कोई भी, तो उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल है. दीज आर द फिजिकल एग्जांपल्स बेसिकली. Okay, so we have also studied about internal energy, which is represented with this sign or alphabet capital E. So it is the total energy contained within a chemical system. बेसिकली किसी भी सिस्टम में उसकी टोटल एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है इन थर्मोडायनामिक्स टर्म्स. ठीक है. So total energy is equal to the sum of kinetic energy and potential energy possessed by atoms, atoms or molecules within a system. So basically, internal energy or total energy is the sum of kinetic and potential energies possessed by the molecules present in a system. जो टोटल एनर्जी अगर आपको किसी भी सिस्टम की फाइंड आउट करनी है तो you have to add up all the energies possessed by this system, and basically there are two major energies possessed by any system, that is kinetic energy and potential energy. So change in internal energy can be calculated as, we represent change with the del sign or delta sign. Del E is equals to E2 minus E1. E2 is for the final condition and E1 is for the initial condition. Whenever we need to calculate or find out the difference of anything, then we subtract a larger value or bigger value from the smaller value, where del A is equal to change in internal energy. E1 is the internal energy of the system in initial state. E2 is the internal energy of the system at final state. Okay, next is enthalpy or heat content, which is represented with a capital H. The total energy content of the system at constant pressure is called enthalpy. Basically, it is the total energy
of any system which is at constant pressure. Throughout the process, जो भी सिस्टम अंडर कंसीडरेशन है, थ्रू आउट उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट अगर रखा जाए तो उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है इट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, तो वो आपको एंथैल्पी जो है वो कहलाएगी. Mathematically, enthalpy can be defined as the sum of the internal energy and product of pressure and volume of the system is called enthalpy. यहाँ से अगर हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करें तो इट इज H इज इक्वल्स टू E प्लस PV. सो H इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस pressure volume product. So basically enthalpy is the mathematically is the sum of total energy or internal energy and the pressure volume product or multiple. First law of thermodynamics, we've also studied about the first law of thermodynamics, which was given by Helmholtz statement. Energy can neither be created nor be destroyed, although it may change from one form to another form. एनर्जी हेल्महोल्ट्ज़ ने क्या बताया कि एनर्जी को जो है ना बनाया जा सकता है ना उसको ख़त्म किया जा सकता है, बट उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, वी कैन चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, वी कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into electrical energy and etc. This law can also be defined as or stated as the total energy of a system and its surrounding must remain constant. टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग की जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऑल्दो उसमें फॉर्म एनर्जी की चेंज होती रहती है, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. Okay. According to first law of thermodynamics, heat absorbed, we have also studied this and we have derived the whole equation for this. Heat absorbed is equals to change of internal energy plus work done. Heat absorbed हमने एक सिस्टम को स्टडी किया था जिसमें हमने देखा था कि जो भी हीट absorb होती है सिस्टम में वो बेसिकली कहाँ यूटिलाइज होती है, तो चेंज इज इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी की को चेंज करने में वो यूटिलाइज होती है. तो इट कैन बी स्टेटेड एज Q इज इक्वल्स टू E2 minus E1 which is the change in internal energy del E plus W the work done. You can write like this also. और दिस ऑल्सो W इधर पॉजिटिव है, यहाँ अगर नेगेटिव हो जाएगा तो del is equals to Q minus W. This is mathematical representation of first law of thermodynamics. We have used this equation in solving problems. Okay, we have also studied some sign conventions. If heat is absorbed by the system, that is endothermic reaction, then Q heat is positive. If heat is released by the system, that is endothermic reaction, then Q is negative. Work done by the system on this round, it is when gas expands or the volume increases, then it is positive W. Work is done on the system by the surrounding, that is gas contracts, volume shrinks or decreases, then it is represented with work done is represented with a minus sign. We have also studied about the pressure volume work और इसको एग्जाम में मैंने आपको बताया था. इस अभी पूछते हैं कि प्रूफ W is equals to P del V. So Q is equals to del E plus P del V. This equation जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ड्राइव हुई है और del E is equals to Q minus P del V. We have also studied about work done at constant volume and at constant pressure. So work done is related to the absorption and evolution of heat during chemical reaction, which may take place by two methods or two processes at constant volume at constant pressure. Work done constant volume पर और constant pressure दोनों conditions में जो है वो हो सकता है. So work done at constant volume और ये इस तरह पूछते हैं proof QV is equals to del V. V represents here heat will absorb at constant volume here. So it is also called isobaric process. Work done at constant pressure.
it is also written as QP is equal to, basically this P, small p here represents the heat is absorbed at constant pressure, is equal to del H, or del H is equal to del E plus V. Del E is basically enthalpy. It is also called isobaric process. Okay, we have also studied Hess's law of constant heat summation. According to Hess's law, the amount of heat absorbed or evolved in a chemical reaction remains same and it is independent of the path of reaction. Hess ने ये कहा था कि जो भी अमाउंट हीट की एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है ड्यूरिंग ए केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन वो सेम रहती है, आइदर वो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट हो, कोई सा भी रूट वो फॉलो करे एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट से एक प्रोडक्ट बनाने में, तो जो टोटल हीट है वो सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है, चाहे वो किसी भी मेथड से किसी भी रूट से प्रोसीड किया हो। और also we stated as enthalpy changes of a reaction remains constant whether the reaction takes place in one step or several steps, एक स्टेप में हो, several steps में हो, many steps में हो, जो enthalpy change है it will remain same. Or can also be stated as the overall enthalpy change for a reaction is equal to the sum of the enthalpy changes for the individual steps in the reaction. Overall enthalpy change किसी भी reaction का वो बराबर है sum of enthalpy change, हर एक specific step के लिए enthalpy changes की sum के equal है. Heat of formation. What is heat of formation? The enthalpy change when one mole of any substance is formed from its elements is called heat of formation. Heat of formation is basically the enthalpy change when एक मोल जो है वो किसी भी सब्सटेंस का बनेगा उसकी फॉर्मेशन का दौरान, बेसिकली फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में जो भी इंथैल्पी चेंज आएगा वो जो है वो हीट फॉर्मेशन कहलाएगा उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की. It is denoted by del HF. We have also solved some problems related to heat of formation in which we were asked to calculate the del H of a given reaction. So for that हमने किस तरह कैलकुलेशन की थी कि सेवरल स्टेप्स में कुछ इक्वेशंस को जो है वो कुछ इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट किया था कि जो फाइनल इक्वेशन आपके पास बन रही थी वो इक्वेशन थी जिसकी del H आपको रिक्वायर्ड थी. डिफरेंट इक्वेशंस की डिफरेंट del H वैल्यूज़ को आपने यूज़ करते हुए माइनस प्लस करते हुए आपने del H की वैल्यू फाइंड आउट की थी किसी स्पेसिफिक या डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए. फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और del H की वैल्यू क्या है इसमें माइनस और नेगेटिव 394 किलो जूल पर मोल. सो नेगेटिव साइन here represents that it is an exothermic reaction. So it was all about chapter number 5, that is analytics of chemical reactions. So if you have any question you can ask me. Thank you.